आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि ऐसे और कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। और इनमें से एक ट्रांजैक्शन ये है कि अगर एक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम वो कन्वर्जन कैपिटल गेन्स के लिए लायबल नहीं होता। What happens is that, as I had also discussed in the previous slide, कई बारी क्या होता है कि एक कंपनी जो है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो अपने आप को पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी में रादर कन्वर्ट कर लेती है। इस केस में क्या है कि जनरली एक कंपनी जो है उसकी एग्जिस्टेंस और एलएलपी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होता। उस केस में व्हाट द लॉ सेज इज कि बिकॉज इफेक्टिवली जो शेयर होल्डर है वही पार्टनर बन रहे हैं, अगर तो एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच कम्स इन विच सेज दैट अगर मैं कोई चीज अपनी ही जेब से दूसरी जेब में डाल रहा हूं, उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स लॉ में ये बताया गया है कि अगर एक कंपनी एक एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन ये नहीं लगेगा प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हो। तो वो कंडीशन क्या है? नाउ लेट अस सी दीज कंडीशंस वन बाय वन। The first condition is that all the assets and liabilities of the company immediately before conversion becomes the assets and liabilities of limited liability partnership. यानी कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में कन्वर्जन से पहले जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो सब एलएलपी के एसेट और लायबिलिटी बन जाने चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं, ये कंपनी में से कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं और कुछ नहीं करते, then it is not a tax exempt conversion. टैक्स एग्जेम्प्ट कन्वर्जन करने के लिए ये जरूरी है कि आपके जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हों कंपनी में कन्वर्जन से पहले, वो आपके एसेट्स और लायबिलिटी बन जाए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर द कन्वर्जन, जितने भी शेयर होल्डर उस कंपनी में थे जो एलएलपी में खुद को कन्वर्ट कर रही है, all the shareholders become the partners of limited liability partnership. तो यानी जितने भी शेयर होल्डर मेरे कंपनी में थे वो सब एलएलपी में पार्टनर बन जाएंगे। एलएलपी में तो शेयर होल्डर होते नहीं, तो आप एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर बन जाएंगे। एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एलएलपी are in the same proportion as their shareholding in the company on the date of conversion. मतलब क्या हुआ? अगर कन्वर्जन से पहले मेरी एक कंपनी थी, उसमें दो शेयर होल्डर थे, मान लीजिए 50-50, और दोनों की शेयर होल्डिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो भी मान लीजिए इक्वल थी। अगर ये कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है, उस केस में as long as both of them remains the partner in the LLP, both of them have equal profit sharing ratio and both have 50-50% capital, partners capital issued by the LLP, this should be a satisfaction of this condition. And if together with this, इसके साथ साथ आप बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं, तो then it is a tax exempt transfer. And the last point is, shareholders do not receive any consideration or benefit directly or indirectly. शेयरहोल्डर्स को पार्टनरशिप फर्म में अपने पार्टनरशिप इंटरेस्ट के अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए, neither directly nor indirectly. Now what can happen here is that suppose आपके इक्वल शेयरिंग रेशियो थी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो थी और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। मान लीजिए ए बी को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कैपिटल तो बराबर रखेंगे लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मेरी ज्यादा रहेगी, मतलब मेरी 60% है और तुम्हारी 40% हो जाएगी 50-50 के बजाय। इन दैट केस इट इज अ वायलेशन ऑफ कंडीशन इन नंबर 2 as well as condition number 3, because what happens is by lieu of this conversion and the revised profit sharing ratio, B is receiving an indirect benefit, and therefore third condition is also not satisfied.
in any form or manner other than by way of share in the profit and capital contribution in the LLP. जस्ट टू रिकैपिटुलेट कि हमने इस स्लाइड में क्या देखा, हमने इस स्लाइड में देखा कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जब सेटिस्फाई करने पे एक कंपनी का कन्वर्जन एक एलएलपी में टैक्सेबल नहीं होता. द फर्स्ट कंडीशन वी सॉ वाज दैट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर, मतलब जितने भी कंपनी के एसेट या लायबिलिटी थे जो वो ओन करती थी वो सब एलएलपी के एसेट या लायबिलिटी बन गए. जितने शेयर होल्डर्स थे कंपनी में कन्वर्जन से पहले वो एलएलपी के पार्टनर बन गए और उनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो सेम रही जो विज़ावी व्हाट देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज इन द कंपनी. कंपनी के केस में भी कई बार पॉसिबल होता है कि आप डिविडेंड्स में डिफरेंट डिविडेंड या डिविडेंड वोटिंग राइट्स रख सकते हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में वो पॉसिबल होता है. और शेयर होल्डर्स को सिवाय पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इन दैट केस दिस इज अ टैक्स exempt conversion of a partnership firm, conversion of a company into an LLP. Moving on, we now move on to long-term capital gains exemption. Basically, every government wants कि उसकी कंट्री में पैसा आए और उसकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं या फाइनेंशियल मार्केट है रादर दे आर वेरी एक्टिव. Because what happens is that if the financial markets are active, there's a lot of inflow of foreign funds. तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जनरली इनकरेज करती है कि स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस हों, कंपनीज में पैसा मिले, कंपनीज को पैसा मिले थ्रू द कैपिटल मार्केट्स एंड देयरफॉर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द एंटायर कंट्री. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इनकम टैक्स में एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाला है जहां पे कि इक्विटी मार्केट्स का पार्टिसिपेशन वो इंक्रीज करना चाहते हैं. नाउ बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोविजन इज टू इंश्योर that there is a lot of inflow of foreign funds into the capital market. Foreign funds as well as domestic also. So in order to provide this incentive, what the government has done is that certain transactions in the equity shares or equity oriented funds have been exempted from tax. The only thing is that you need to kind of pay a security transaction tax, which is a nominal amount of 0.01 to 5%. Generally, and it again varies depending upon whether it's a short-term or a long-term capital gain, which is payable by the company. So now, having seen this, basically, let me take you through the provision. The provision reads as under: long-term capital gains arising from the transfer of equity shares in a company or a unit of equity-oriented fund shall be exempt from tax where such transfer is subject to payment of securities transaction tax. So the first thing is that such a transfer has to be long-term capital gain. अगर आपका short-term capital gain है तो वो exempt नहीं होगा. There's a concession given to the short-term capital gain insofar as, those which are suffering STT. But basically, long-term capital gain is the one which is totally exempt from tax. So long-term capital gains arising from the transfer of, ये कब होने चाहिए long-term capital gain? It is not that every and all long-term capital gains are exempt from tax. It is only when the long-term capital gains arises from the transfer of equity share in a company. So the exemption is only in respect of equity share of the company or an equity oriented fund, provided when will this be exempt from tax, where such a transfer is subject to payment of securities transaction tax. So therefore, long-term capital gain arising from equity shares or equity oriented funds are exempt from tax where they are subjected to payment of STT. However, an interesting thing which comes up is that this section, while it gives exemption from long-term capital gains, says that MAT
on profits from such gains applicable, which means although capital gain तो मेरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं कंपनी हूं और मैं मैट के लिए लायबल हूं, तो जो भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये मेरा बुक प्रॉफिट्स में इंक्लूड होगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग माय मैट इनकम. So let me just read this right hand column. What does it read? It reads, long term capital gain of a company shall however be taken into account in computing book profit and income tax payable under section 115 JB. So effectively अगर आप देखें, मतलब the government is very smart here. What they have done is कि they have said that okay, you're not liable to pay LTCG. At the same time उन्होंने ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट का मैट लगा दिया, बिकॉज एलटीसीजी का नॉर्मल रेट इज 20% एंड मैट हैज बीन वेरिंग बिटवीन 15 and 18% ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. सो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हालांकि आपका एग्जेम्पशन मिल जाता है इन केस यू आर अ कंपनी यू हैव टू पे मैट. हाउएवर इफ यू आर नॉट अ कंपनी देन यू आर इन अ बेनिफिशियल प्रोविजन बिकॉज दिस एग्जेम्पशन इज इक्वली एप्लीकेबल टू योर इंडिविजुअल्स, your partnership firms and others, while the applicability of MAT is only on companies. So the best part is that if you are not a company, in that case you are not supposed to pay any MAT, and therefore if you get the long term capital gain exemption under 1038 there is no further taxation. The last point is, when is STT applicable? STT is basically applicable for sale transactions which take place on or after October 1, 2004. It is interesting to note here that even in case of sale of listed company shares, if the sale is off the market, if it is not on the stock exchange, in that case the exemption is not available. So basically, why? Because STT is not payable in such a case. अगर मेरे पास लिस्टेड कंपनी के शेयर है और मैं प्राइवेट अरेंजमेंट में किसी को भी एक एग्रीमेंट साइन करके वो बेच देता हूँ, I don't do it on a stock exchange, in that case the exemption is not available. So just to recapitulate the entire thing, any long-term capital gain which arise from transfer of equity share in a company or a unit of an equity-oriented fund are exempt where STT is paid. However, such profits are liable to MAT. Since MAT is applicable only in case of companies, partnership firms and individuals do not have any further taxation, and the security transaction tax is applicable only on sales which are happening after October 1, 2004.